हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड्स, जो कि चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का ये टॉपिक है। अमीनो एसिड्स, इसमें बात करेंगे हम लोग आज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, हाउ टू रिमेंबर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड हाउ टू रिमेंबर एसेंशियल अमीनो एसिड। एक मेमोनिक्स है जिसके थ्रू हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, और टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के भी एग्जाम्पल भी हम लोग याद कर सकते हैं, सारे ट्रिक के थ्रू ये, ठीक है। तो हम लोग पहले अमीनो एसिड के बारे में समझेंगे कि अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीन्स अगर अमीनो एसिड, व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड contains amino group. You know from the name amino means it contains amino group, means NH2 is the amino group and carboxylic group. Amino acid, here acid represents the carboxylic acid. Carboxylic acid represents the carboxylic group. Okay, means COH. This is the carboxylic group on the same carbon. Okay, on the same carbon, that is known as alpha carbon. क्या बोलते हैं उसे? अल्फा कार्बन। मीन्स अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यस, बिकॉज दिस इज द कार्बन alpha carbon. Which carbon is this? This is the alpha carbon and all groups are different, NH2, H, COH. So this is a chiral carbon, and if R is equal to CH3, if R is equal to H, then it will be not optically active, because here two groups are same and this carbon will not be chiral carbon, so this is not be optically active. So that's why glycine is optically inactive compound. Okay, glycine is optically inactive compound and remaining all amino acids are optically active. So first and most important points are all are optically active except glycine. Okay, except glycine. So in the amino acid, one group is H and other group is NH2 and one of the group is COH, and one group is R, which is the variable. This is the variable alkyl group, and value of R is equal to H and value of R is equal to CH3 and value of R is equal to CH2OH. अगर CH2OH होगा तो सेरीन इसका नाम होगा, अगर CH3 हो जाएगा तो एलानीन नाम होगा, और हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन होगा, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ, मैं ग्लाइसिन के बारे में जितने भी ये एनसीईआरटी में 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव and listen, write down the all presentation to your notes book. This will be very easy for you, okay, if you like this. And optically inactive, and this is the only symmetrical amino acid, because the structure is like that, NH2 COH, and you know any compound which is symmetrical or optically inactive having one chiral carbon. So this is the line of symmetry. If then this will be symmetrical amino acid. Okay, now about the alanine is in class 12 chapter evolution. You will learn about that the alanine formed in the Urey and Miller experiment, first time formed in Urey and Miller experiment. That's the point. Okay, now amino acid is the amphoteric compound. You all know that, because it has both what group? COH group, means
shows what acidic nature, okay, and NH2 group, it shows basic nature. So that's why amino acid is known as amphoteric compound. At isoelectronic pH value amino acid present in the form of zwitter ion. तो ये amino acid है, ठीक है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक पीएच वैल्यू, इक्वल पीएच वैल्यू पे क्या होगा, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मींस यहाँ का जो H होता है ये यहाँ उठ के चला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन यहाँ से आता है, जिसमें प्लस और माइनस साइन दोनों होता है, वो ज्यूटर आयन होता है, ठीक है। चलो, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एमिनो acidic amino acid, second is basic amino acid, and third is neutral amino acid. I will tell you example about the acidic amino acid, basic amino acid, and neutral amino acid. What is acidic amino acid? Acidic amino acid having only one amino group and two COH group present. ओके, मीन्स एक एमिनो एसिड होगा ग्रुप और दो COH ग्रुप होगा, तो उसको बोलेंगे एमिनो एसिड। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे एसिड लगा वो एसिडिक एमिनो एसिड है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, इट इज ऑल्सो एमिनो एसिड विच इज एसिडिक इन नेचर। aspartic acid, this is also acidic amino acid, and these are negative nature, okay, that's the point. Now basic amino acid is the amino acid in which two amino group is present, means basic amino group is basic nature, amino group shows the basic nature, means दो amino group is present plus one COH group present, that's a point. And this an example is, एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, अल्का हिज लायर, ठीक है। अल्का से हो जाएगा क्या, आर्जिनिन, हिज से हो जाएगा हिस्टिडीन, एंड लायर से हो जाएगा लाइसिन, ओके, लायर से क्या हो जाएगा, लाइसिन। दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द पॉजिटिव नेचर, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हो गया, ट्रिक क्या हो गया, अल्का इज लायर, ओके। नाउ न्यूट्रल एमिनो एसिड एंड दिस आर द एमिनो एसिड इन विच द वन अमीनो ग्रुप plus one COH group, means equal amount of amino group and COH group present. This is present in form of zwitter ion, and what is the nature of zwitter ion? There is a no movement in electric field, and it show no movement in electric field, that's the point. And it is a neutral amino acid, so it is neutral in nature. Rest example, what's example, rest 15 amino acid, you know, rest 50 amino acid is the example of neutral amino acid, okay. Now I am going to tell you about the एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अमीनो एसिड को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किसके अकॉर्डिंग। देखो, बॉडी को जरूरत है इसलिए ये एसेंशियल है, ठीक है, बॉडी को जरूरत है इसलिए ये एसेंशियल है, ठीक है, मीन्स बॉडी में नहीं मिल रहा, ठीक है, तब ये एसेंशियल है। अगर बॉडी में मिल रहा तो ये नॉन एसेंशियल है, मतलब अगर बाहर से ना ले रहा हो तो, बाहर से अगर डाइट में हम लोग नहीं ले रहे हैं तो नॉन एसेंशियल है, मीन्स बॉडी में तो पहले ही प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड है तो वो हमें मीन्स हमें बाहर से लेना पड़ रहा है डाइट में, तो एसेंशियल चीज वही है जो हम लोग बाहर से लेते हैं, ठीक है।
तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। जो बाहर से लेते हैं तो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल है थ्रियोनिन, फिनाइललाइन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, वैलिन और मिथियोनिन। देखो थ्री फिनाइल हिल ट्रिप्स आर वेरी मच एसेंशियल टू लर्न। क्या ट्रिक है? थ्री फिनाइल हिल ट्रिप्स आर वेरी मच एसेंशियल टू लर्न। थ्री से थ्रियोनिन, फिनाइल से फिनाइल एलानिन, हिस्टीडीन से एच से हिस्टीडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन एंड ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्टोफैन। ओके, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन, आर से आर्जिनिन एंड वेरी से वैलिन एंड मथ से मिथियोनिन. Methionine is very important amino acid among them. Okay, these are not synthesized in the animal body and it must be obtained from the diet. Okay, and this is the non-essential amino acid which is alanine, serine, cysteine, aspartic acid, glutamic acid, glutamine and asparagine, tyrosine, proline and glycine. These are synthesized in the animal body, so not required in the diet. Is always present in the animal body. Okay, so that was our trick, and I will discuss some important points where question may be asked. First point is that arginine and histidine are semi-essential amino acid. Okay, this is the first point. Second point is that except glycine, I already discussed that. Except glycine, all amino acids are optically active. Actually second point is that point. I will already discuss second point, but you write as a second point as a aromatic amino acid. The example tyrosine, phenylalanine, okay, and tryptophan. And you must have to know the remembering trick. What is the trick? Try, feed, try. Tie, feed, try. What is the trick? To learn the aromatic amino acid is the tie, feed, try. What is the trick? Sorry, this is not visible to you. I have to change color. So, trick is that try, tie, feed, try. What is the tie, feed, try is the remembering trick to learn the aromatic amino acid. That is the point. And the next one most important point is that sometimes question may be asked for the formation of protein chain. You know, many amino acids are joined to form a protein chain. The amino acid are joined together by peptide bond, also known as amide bond. Sometimes may be given as amide bond. So this is the one of the protein H R C double bond OH, and we have to remove water. What we have to remove? Water. This is the OH group, and this is the, and another amino acid is like that. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वाटर रिमूव होगा, ठीक है, -H2O. तो बताओ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन क्या होगा? n-1. अगर नंबर ऑफ एमिनो एसिड दिया होगा तो उसका नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा? यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड मतलब 2 एमिनो एसिड के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, मीन्स 2 से 1 कम हो रहा है तो 3 एमिनो एसिड के लिए 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. एक और एमिनो एसिड यहाँ जोड़ देंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, मीन्स नंबर ऑफ पेप्टाइड
bond in a protein is equal to n minus 1. This is the formula you have to fit in the mind, that number of peptide bond is equal to n minus 1, where n is equal to what? Number of amino acid. I think this is the simplest things I have already discussed. Okay, so that is the very important point, and I also discussed some important points that maybe sometimes maybe will exam maybe ask in examination. So you have to fit in the mind that the essential amino acid example, and neutral amino acid example, basic and acidic amino acid, and what is the some important points about the glycine or alanine. So that point you have to remember and keep in the mind. आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।